नमस्कार। आप सभी दर्शकों का इग्नू के रीजनल सर्विस डिवीजन के साप्ताहिक प्रोग्राम स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में हार्दिक स्वागत है। यह प्रोग्राम प्रत्येक मंगलवार को अपराह्न 3 to 4 PM इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर, जिसे कि EMPC भी कहते हैं, द्वारा प्रसारित किया जाता है। मैं डॉक्टर DP सिंह, डिप्टी डायरेक्टर RSD, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर अमित चतुर्वेदी जी, नमस्कार। सीनियर रीजनल डायरेक्टर नोएडा, और दूसरे हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर बीर अभिमन्यु कुमार जी, नमस्कार, जो डिप्टी डायरेक्टर SRD में है, हमारा इग्नू का रजिस्ट्रेशन डिवीजन वहां देखते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं कुछ उद्घोषणा करूंगा कि अभी हमारा जो है इग्नू का नामांकन जुलाई सत्र का चल रहा है। जो लोग इच्छुक हैं, इग्नू में नामांकन कराना चाहते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम में, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में, वो लोग जो है अतिशीघ्र नामांकन करा सकते हैं, क्योंकि नामांकन की जो अंतिम तिथि है 10 अक्टूबर 2023 है। तो आप लोग जो है, जो लोग इच्छुक हैं इग्नू में नामांकन के लिए, वो लोग जो है नामांकन करा सकते हैं। तो सर्वप्रथम सर मैं मुखातिब होऊंगा डॉक्टर अमित चतुर्वेदी सर के पास कि सर जो है, चूंकि एडमिशन की भी लास्ट डेट चल रही है, तो उसके लिए आप स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे जो लोग नामांकन कराना चाहते हैं? धन्यवाद डॉक्टर DP सिंह जी, डिप्टी डायरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू फॉर बिकमिंग अ डिप्टी डायरेक्टर। वी रिसेंटली यू हैव बीन प्रमोटेड एज ए रीजनल डायरेक्टर, एज ए डिप्टी डायरेक्टर। जहां तक सवाल है इग्नू के नामांकन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसा डॉक्टर DP सिंह ने बताया कि उसके लिए 10 अक्टूबर यानी आज ही है, रात के 12 बजे तक हमारी लाइन्स खुली हुई हैं। www.ignou.ac.in पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.ignou.ac.in पर एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। और फीस के लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है, हमारा बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली सिस्टम है, और आप उसको फॉर्म को पर्टिकुलरली ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और साथ साथ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जरूर लिख दीजिएगा उसमें, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशंस हम लोग करते हैं आपके मोबाइल नंबर पे SMS के द्वारा या उसके आपके ईमेल पर भेजते हैं, तो आप बड़ी केयरफुली अपना ईमेल एड्रेस तथा अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें। और मैं आपसे ये भी विनती करता हूं कि आप उसको फ्रीक्वेंटली चेंज मत करिएगा। दिस इज दी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू यू। और आप अपने पर्टिकुलर्स देख लीजिएगा, जब भरिएगा आपको खुद ही को आपको टाइप करना है, फॉर्म भरना है, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ये बड़े केयरफुली आप भरिएगा। और चेक करने के बाद जब आप फाइनल हो जाए तो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आप अपना फीस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा जमा कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी यूजर फ्रेंडली सिस्टम, और आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट डेट आज ही की है, और साथ साथ री रजिस्ट्रेशन की भी लास्ट डेट आज ही है 10 अक्टूबर को, और उसमें 200 रुपये लेट फीस के साथ आपको जमा करना है। जहां तक फ्रेश एडमिशन की बात है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम को छोड़कर सारे प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। और जहां तक री रजिस्ट्रेशन का सवाल है, री रजिस्ट्रेशन का मतलब सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है। यदि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, या सेमेस्टर बेस में, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में लेना है एडमिशन, तो उसके लिए आपको आज लास्ट डेट है। आप जमा कर सकते हैं सेमेस्टर सिस्टम में भी, और री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 10 अक्टूबर है और 200 रुपये लेट फीस के साथ है। आप ऑनलाइन एडमिशन भी ले सकते हैं और री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी भर सकते हैं। तो ये है हमारा एडमिशन के लिए जी। डॉक्टर अभिमन्यु जी की तरफ हम लोग जो है मुखातिब होंगे। अभिमन्यु जी, आप चूंकि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन में है, जो कि सारा एडमिशन देखता है ऑल ओवर इंडिया में, इग्नू का जितना भी एडमिशन होता है गवर्न आपके डिवीजन द्वारा होता है, तो आप ये बताना चाहेंगे कि ये हमारा ODL और ऑनलाइन दोनों मोड में ये सुविधा है या सिर्फ ODL में? जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीप भाई।
मैं सबसे पहले तो अपने जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मैं उन सबका स्वागत करता हूं। और आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे आपके टीवी स्क्रीन पे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है, मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि उस नंबरों के माध्यम से आप हमारे साथ इस स्टूडियो में जुड़ सकते हैं और हमारे से मिल करके आप अपनी बातों का जो है, जो भी आपके मन में कोई प्रश्न आ रहे हैं, कोई सवाल हैं, कुछ जानना चाहते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग पूरी जो हम लोग टीम बैठे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जो है अच्छे से अच्छे जवाब दे सकें, जो भी उचित हो सकता है। तो जैसा कि अभी हम डिस्कशन में बात कर रहे थे कि एडमिशन के बारे में, सर ने भी बताया कि फ्रेश एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए जुलाई 23 सत्र का जो है अभी चल रहा है और लास्ट डेट आज ही है, जैसा कि बताया सर ने कि 10 अक्टूबर। और अभी जो सेमेस्टर जो है, जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो 6 महीने के हैं, उसके अलावा अन्य प्रोग्राम जो ऑफर में हैं उसके बारे में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो है एक थोड़ा सा अगर हमारे स्क्रीन शेयर कर सकते हैं जो कंप्यूटर का है, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वेबसाइट में वो कहाँ जा सकते हैं, जिससे कि उन्हें थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसा कि सर ने बताया कि इग्नू का वेबसाइट है www.ignou.ac.in। जब आप इस लिंक पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन का एक लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप फ्रेश एडमिशन और फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस एंड ऑनलाइन दो तरह के लिंक देखेंगे। इसमें आप जब डिस्टेंस मोड को देखेंगे तो वो ओडीएल मोड से मतलब हमारा है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग में जो प्रोग्राम्स ऑफर में हैं, जो कि 288 प्रोग्राम्स हैं जो पूरे के ऑफर में हैं ओडीएल मोड में। इसके अलावा जो है दूसरा लिंक जो है ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो है 44 हैं, 44 प्रोग्राम्स जो ऑनलाइन मोड में ऑफर में हैं। दोनों में अंतर ये है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में जो प्रोग्राम्स ऑफर हैं उसमें आपको स्टडी सेंटर्स की, रीजनल सेंटर्स की और जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो स्टडी सेंटर्स पे या काउंसलिंग सेशंस हैं, तो कहने का मतलब जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ है आपके स्टडी सेंटर पे ऑर्गेनाइज की जाती है। लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम्स में है कि आपके लिए एसएलएमएस जो पोर्टल है हमारा ऑनलाइन का, उसके माध्यम से आपको सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक मोटा मोटी जो है अंतर है। तो जो लोग जो है सुन रहे हो, अगर वो चाहते हैं कि टोटल उनका ऑनलाइन मोड में पढ़ाई हो, पढ़ना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है जो इग्नू का एडमिशन ऑनलाइन पोर्टल है समर्थ पे, वहां पे आप जाके नामांकन करा सकते हैं। और चूंकि जैसा बताया डॉक्टर अभिमन्यु जी ने कि ओडीएल सिस्टम में आप फेस टू फेस मोड में भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, और इसके अलावा आपको जो है एक रीजनल सेंटर होता है और स्टडी सेंटर आप खुद चूज करते हैं, जहां पर आपको जो है स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो जो लोग ऑलरेडी नामांकन करा चुके हैं, अब उनके लिए जो है इंडक्शन मीटिंग्स का भी आयोजन किया जा रहा है। तो इंडक्शन मीटिंग के बारे में सर डॉक्टर चतुर्वेदी सर से हम आग्रह करेंगे। सिंह साहब, ऐसा है जहां तक जो भी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, सबसे first of all I would like to inform about what is the process of the admission. After completion of the admission certificate आप जमा करने के बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो वी इशू अ रजिस्ट्रार एसआरडी एक लेटर ऑफ कंफर्मेशन भेज देता है स्टूडेंट के पास। उसके बाद रीजनल सेंटर्स का रोल आ जाता है। रीजनल सेंटर उसकी लिस्ट को जनरेट करते हैं और कंसर्न स्टडी सेंटर, जो अलॉटेड स्टडी सेंटर, जो स्टूडेंट्स अपनी चॉइस पर स्टडी सेंटर लेते हैं, उन पर हम लोग सर्कुलेट कर देते हैं। और द स्टडी सेंटर इज ए प्लेस वेयर द स्टूडेंट्स interact with the teachers, counselors and a peer group. वहाँ पर जाके आपस में बात करते हैं, मिलते हैं, और वहाँ पर that study center is headed by the coordinator, and the responsibility of the coordinator is to prepare the counseling schedule, online counseling schedule, offline counseling schedule वो prepare करना होता है उनको, and they circulate among the students, जो भी students हैं। तो अभी वो अपने study centers पर जाते हैं। तो आपका तो फर्स्ट मीटिंग जो हम लोग करते हैं, इंडक्शन मीटिंग करते हैं। इंडक्शन मीटिंग कभी कभी हम लोग ऑनलाइन करते हैं, सारे स्टूडेंट को इकट्ठे एक साथ हम लोग बुला लेते हैं स्टूडेंट को, जो हम लोग चल रही हैं, जो भी जुलाई 2023 में जो एडमिशन्स हुए हैं उनकी इंडक्शन मीटिंग हम लोगों ने शुरू कर दी है। और जो अभी लास्ट डेट के बाद जो एडिशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए हम अलग से इंडक्शन मीटिंग करेंगे, प्लान कर देंगे। इंडक्शन मीटिंग इज ए इंट्रोडक्टरी मीटिंग।
उसमें we inform the students about what is the difference between the ODL system and the conventional education system. तो जो भी है उसके बारे में, उसकी मोडेलिटीज़ के बारे में स्टूडेंट्स को हम लोग बताते हैं. मोडेलिटीज़ जरूरी है क्योंकि आप लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से हैं, एंड दे आर नॉट हैबिचुअल अबाउट द डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम. तो वो उनको हम लोग बताते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर इन द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टडी सेंटर, व्हाट इज द रोल ऑफ द रीजनल सेंटर, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द हेडक्वार्टर. तो दिस इज अ 3-tier system: headquarter, regional center, and study center. These are and the regional center is headed by the regional director, and the study center is headed by the coordinator, whereas the headquarter is headed by the vice chancellor of the university. तो जो भी पॉलिसीज होती हैं यूनिवर्सिटी की पॉलिसी से, that is circulated to the regional center, and regional center circulate to the study center. The study center is a focal point where you have to interact. The student has to interact, and whenever they call for the induction meeting, whenever they call for the counseling session, you must go there and attend the counseling session. In our system, counseling is different from the teaching. तो आई वुड लाइक टू ब्रीफ आपको बताना चाहते हैं कि काउंसलिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है. टीचिंग में द बेसिक एम ऑफ द टीचर इज टू कंप्लीट द होल सिलेबस ऑफ द यूनिवर्सिटी. जो भी यूनिवर्सिटी का आपके प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उस कोर्स का, उसको कंप्लीट करना होता है, वो पूरे एकेडमिक साइकिल में होता है. बट एज फार एज द काउंसलिंग सेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द लिमिटेड आवर्स. इट इज बेस्ड ऑन द क्रेडिट सिस्टम. तो ओनली द 10% ऑफ द टोटल क्रेडिट स्टडी आवर्स के हिसाब से हम लोग काउंसलिंग प्रिपेयर करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपका 4 क्रेडिट का कोर्स है तो 120 स्टडी आवर, 1 क्रेडिट पर आवर 30 आवर्स ऑफ स्टडी, एंड 4 क्रेडिट का कोर्स यदि आपका है, कोर्स लिया है आपने, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 120, एंड 120 स्टडी आवर्स में 10% ऑफ स्टडी आवर्स आर कवर्ड थ्रू एकेडमिक काउंसलिंग बाई द स्टडी सेंटर, एंड द रेस्ट ऑफ द काउंसलिंग study hours are completed by the student themselves by studying the study material, by completion of the assignment, by taking the appearing in the examination. तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है. तो ओनली द 10% यानी 12 आवर्स यानी 120 घंटे आपके लिए पढ़ाई प्रेस्क्राइब्ड है फॉर एक एवरेज स्टूडेंट के लिए. इन 12 आवर्स में यदि 5 सेशंस होते हैं, 6 सेशंस होते हैं, तो इट इज वेरी it is not possible for the teachers to counselor to complete the whole syllabus. तो इसमें मेरा ये आपको सजेशन है कि whenever you go for the counseling session, you should go with your problems pertaining to the study material, and वो आप रिजॉल्व करिए. दैट इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस. तो जहाँ तक है इंटरेक्शन जो है, एज फार एज द कन्वेंशनल एजुकेशन, देयर इज ए most of the time teachers speaks and the students listen, but as far as the counseling system is concerned, this is a two-way contact session. The communications are from the both sides, the teacher counselors to the student and students to the counselor. This is the so induction meeting is a main important meeting, and you must go there. and और उसमें आपको इंडक्शन मीटिंग्स में अपने डॉक्यूमेंट्स को भी लेके जाना होता है, वेरीफाई कराना होता है स्टडी सेंटर के, और वहां पर यू विल गेट द काउंसलिंग शेड्यूल. पूरा आपको मिल जाएगा, काउंसलिंग शेड्यूल मिल जाएंगे. यू कैन इंटरेक्ट विद द एकेडमिक काउंसलर्स, यू कैन इंटरेक्ट विद द पीयर ग्रुप. जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ के हैं जिन्होंने उस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, वो वहां पर मिलेंगे आपको. तो मेरी एडवाइस है आप लोग जरूर जाइए. ये जैसे कि सर ये जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का वो है दौर कह सकते हैं जी जी. कि आजकल सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक और इसके अलावा व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब के माध्यम से स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जा रही है, मेल के माध्यम से. तो क्या इंडक्शन के लिए भी हम लोग जो है इस चीज को फॉलो कर रहे हैं? जो भी है डीपी सिंह सर, कि जो भी इंफॉर्मेशन हम सोशल मीडिया के थ्रू भी स्टूडेंट को डिसेमिनेट करते हैं, ट्विटर पर भी करते हैं बच्चों को, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी हम आपसे कहते हैं कि सारे जितने भी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन करें, फेसबुक करें, ट्विटर करें, और उसके बाद जो भी हमने एक टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू भी, और व्हाट्सएप के भी थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन भेजते हैं. तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा. अपना हमारी जो इग्नू की वेबसाइट है वो भी बड़े ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा. उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिसेमिनेट करते हैं. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बहुत जरूरी है. और मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि डू नॉट
change frequently the mobile number, and once you have taken the mobile number, वो अपने पास यदि in case यदि कुछ गड़बड़ हो जाती है तो it must be brought to the notice of the regional director, concerned regional director. और दूसरी चीज मैं एक चीज बताना भूल गया कि जब आपका एडमिशन कंफर्म हुआ तो यू मस्ट चेक योर पर्टिकुलर्स, पूरा ध्यान पूर्वक पर्टिकुलर्स देख लीजिए कि आपका नाम सही है कि नहीं, आपका एड्रेस सही है कि नहीं, आपका मोबाइल नंबर ठीक है कि नहीं, आपका ईमेल एड्रेस ठीक है. फिर बाद में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, परंतु फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो यू मस्ट इन्फॉर्म टू दी रीजनल डायरेक्टर, कंसर्न रीजनल सेंटर. जिस रीजनल सेंटर में आपने एडमिशन लिया उस रीजनल सेंटर के रीजनल डायरेक्टर को. तो रीजनल सेंटर की जो ईमेल एड्रेसेस आर वेरी सिंपल. जैसे फॉर एग्जांपल आपको नोएडा में भेजना है, आरसी नोएडा को भेजना है, तो rcnoida@ignou.ac.in. यदि आप दिल्ली 2 में जाना चाहते हैं तो rcdelhi2 केवल उस प्लेस का नाम बीच में, rc इज अ कॉमन @ignou.ac.in कॉमन. आप उसको बीच में जो भी है आप उस कंसर्न रीजनल सेंटर का है. जैसे नागपुर के हैं rcnagpur@ignou.ac.in. तो इट इज वेरी सिंपल. और ज्यादातर आप कम्युनिकेशन ईमेल पर भेजिए. ज्यादातर मोस्ट ऑफ द रीजनल डायरेक्टर, मोस्ट ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, दे आर गेट इन टच विद, वो आपके ईमेल्स देखते रहते हैं और अब जवाब देते हैं. आप पेपर पर चिट्ठी मत भेजिएगा क्योंकि इट इज लॉस एंड ट्रांजिट भी होती है. फिर आप कहते हैं कि मैंने इतनी चिट्ठी भेजी, आपके पास का जवाब नहीं आया. तो उसको अवॉइड करने के लिए यदि आपको चिट्ठी भेजना है तो स्कैन करके ईमेल करके भेज दीजिएगा. तो तो उसमें ये बेनिफिट है, आपके पास प्रूफ भी है कि आपने भेजा, आपको इस टाइम में भेजा. यदि उसका कोई जवाब नहीं आता है तो यू कैन इमीडिएटली रेस्पॉन्ड, उसको कॉल बैक कर सकते हैं, उसको दोबारा रीसेंड कर सकते हैं. आई हैड उसका कोट करते हुए कि आपने उस तारीख को मेल भेजा था, आपका जवाब कोई नहीं आया, प्लीज लुक इनटू द मैटर. तो उसको हम लोग ध्यान से देखते रहते हैं. तो ये कोशिश करिएगा ज्यादातर आप ईमेल पर ही जवाब दीजिएगा. हमारा सोशल मीडिया जो है, हमारी वेबसाइट जरूर देखिए, कंसर्न रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट भी देखिए, उसमें काउंसलिंग शेड्यूल्स वगैरह रहते हैं. तो बड़े ध्यान पूर्वक आप देखिएगा. और दिस इज द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम. ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा. इसी सिलसिले में हम ये भी बताना चाहेंगे कि ड्यूरिंग कोविड बहुत सारे रीजनल सेंटर्स ने, बहुत सारे क्या लगभग सभी ने छोटे छोटे वीडियोज अपने बनाए थे इंडक्शन मीटिंग के लिए. तो वो आप देख सकते हैं, अभी भी रेलिवेंट है. सिर्फ डेट्स की हो सकती है कोई वो हो लास्ट डेट, जो कि उसके लिए आपको जो है टाइम टू टाइम वेबसाइट देखनी पड़ेगी इग्नू की या रीजनल सेंटर की. लेकिन बाकी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो सेम है. तो आप जो है रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे जाके या रीजनल सेंटर के फेसबुक पेज पे जाके जो है वो वीडियोज आप देख सकते हैं. और जैसा कि सर बता रहे थे कि आपको जो है अगर आप काउंसलिंग अटेंड करते हैं तो काउंसलिंग के पहले आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप जो है विषय को जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे. आपके पास स्टडी मटेरियल पहुंच गया होगा. अगर किसी के पास नहीं पहुंचा है स्टडी मटेरियल तो वो लोग जो है स्टडी मटेरियल के लिए ई ज्ञान कोर्स पे, जो इग्नू के मेन वेबसाइट पे जाके ई ज्ञान कोर्स सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा. या डायरेक्ट ई ज्ञान कोर्स पे जाके अपना स्टडी मटेरियल और प्रोग्राम गाइड डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं. इसके अलावा इग्नू का ई कंटेंट ऐप भी है जो कि आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होता ही है लगभग, तो वहां से भी आप लोग जो है अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं. तो इसके अलावा जो है हम जैसा सर बता रहे थे कि आप लोग जो है ईमेल के द्वारा जो है अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं. तो इसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक iGram करके है जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा सा डॉक्टर अभिमन्यु जी बताएंगे. जी कैसे रजिस्टर करें, कैसे? पहले तो मैं, चूंकि एडमिशन की बात चल रही है, तो पहले वहां से हम ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा. जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि जो एडमिशन के लिए किसी को अगर नया एडमिशन करना है, चूंकि साइकिल अभी चल रहा है और आज लास्ट डेट है, तो जैसे डिस्टेंस मोड की मैंने जैसे एक बताया था, तो जब इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा. अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो ठीक है. सर ने भी बार बार कहा कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूरी होता है. ये रजिस्ट्रेशन के लिए आप देखिए कि यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया हुआ है, तो कोई भी विद्यार्थी
जब हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहता है तो उसको सबसे पहले जो है एज ए न्यू यूजर, एज ए न्यू पर्सन जो है यहाँ पे पहले लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे आप देखिएगा कि जो पर्टिकुलर्स डालने होते हैं इसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो आपका वैलिड ईमेल आईडी है वो जरूर डालिएगा। उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन के बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ते हैं जो फॉर्म भरना होता है। सर ने जैसा कि पहले ही बताया, तो आपको जो फॉर्म भरना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, एडमिशन के लिए, उसके लिए कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। इंस्ट्रक्शंस आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एडमिशन से रिलेटेड है, इसकी भी लिंक दी हुई है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ हम ये भी एडवाइस करेंगे कि जो हमारा कॉमन प्रोस्पेक्टिव वेबसाइट पे है उसको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि प्रोग्राम्स के बारे में, उसकी जो ड्यूरेशन के बारे में, किस तरह के कोर्सेज उसमें अवेलेबल हैं, कितनी फी है, ये सारी जानकारी जो है प्रोस्पेक्टस में आप देख सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार इस लिंक पे जाते हैं, एज ए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करते हैं, उससे पहले देखिए कि यहाँ पे जो है आप इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है आपको, है ना। जैसा कि अभी आप प्रोग्राम में चर्चा हो रही थी कि कैसे आप वीडियो भी देख सकते हैं, तो यहाँ देखिए कि एक वीडियो की भी लिंक दी हुई है कि कैसे आपको वॉच वीडियो एक है लिंक दिया हुआ, आप इसको देख करके चीजों को जान सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस जो है ये देखिए कि इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं किस किन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि हमने बताया आपको कि आपका एक अपना ईमेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और पासवर्ड ऐसा रखिए कि जो आपको कन्वीनियंटली याद हो और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, ताकि कोई और उस चीज से छेड़छाड़ ना कर सके आपकी चीजों को। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसकी भी देखिए कि क्या क्या साइज रिक्वायरमेंट है। आपके स्कैन फोटोग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी, सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, जो आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों के जो है आप रेडी करके रखेंगे तो आपको फॉर्म भरते समय, फॉर्म सबमिशन के टाइम पे किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और लास्ट में होता है कि आपको जो प्रोग्राम फी पेमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए आप किसी तरह का भी जो आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है नेट बैंकिंग की, उसके माध्यम से आप फी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो है जो भी जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक चीज इसी में और हम आपसे करना चाहेंगे। जैसे कुछ बच्चे जो है साइबर कैफे से फॉर्म फिलअप कर देते हैं और फिर बाद में अगर उनको कुछ डिफिशियंसी रहती है उनके फॉर्म में तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए क्या आपका कुछ सुझाव रहेगा? जी, तो जैसा कि सर ने ये एक सवाल उठाया जो बहुत ही जिन्यून क्वेश्चन है, हमारे पास कई इस तरह से बच्चे आते हैं। इसीलिए जो हम कहते हैं, अभी प्रोग्राम के माध्यम से अमित सर ने भी बताया और हमने भी आपको बताया कि आपका एक प्रॉपर वैलिड ईमेल आईडी होना जरूरी है और मोबाइल नंबर, जिससे कि मैसेजेस जो हैं, डिस्क्रिपेंसी मैसेज या किसी तरह का कंफर्मेशन मैसेज, वो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी या मोबाइल नंबर पे ही जाए। इसीलिए आप कोशिश ये कीजिए कि वो आपका खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो, ना कि साइबर कैफे वालों का मोबाइल नंबर आप यूज करें। एक समस्या और हमने नोटिस की है साइबर कैफे के माध्यम से, अगर आपने फी पेमेंट की हुई होती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो फी पेमेंट के में जो इशू आती है, बाद में पेमेंट तो हो जाता है, लेकिन किस तरह की जब कैंसिलेशन की बात आती है, रिफंड जब होता है, तो वो उनके अकाउंट में चला जाता है, ना कि आपके पास आती है, और वो आपको बताते नहीं कि उनके अकाउंट में आपके पैसे आ चुके हैं। तो ये ऐसा होता है कि फिर आपके मॉनेटरी लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। कुछ और भी इश्यूज आते हैं, मान लीजिए आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं किया है और उन्होंने पीछे से आपका जो है मेल आईडी के माध्यम से कैंसिलेशन के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट भेज दी, तो हमें तो नहीं पता, यूनिवर्सिटी को नहीं पता कि किसने भेजा है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होती है उसी ईमेल आईडी से कोई भी कम्युनिकेशन अगर आती है तो हम इंटरटेन करते हैं किसी को भी। तो अगर उस ईमेल आईडी से किसी ने रिक्वेस्ट भेज दी कि भाई हमारा एडमिशन कैंसिल कर दीजिए, तो आप परेशान हो जाएंगे, आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा, आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा, तो और भी तमाम तरह के इश्यूज आते हैं। इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए। जब आप फॉर्म भरते हैं तो ये कोशिश कीजिए कि आपका खुद का ईमेल आईडी हो, आपका खुद का मोबाइल नंबर हो, और जो पर्टिकुलर्स आप भरते हैं, एड्रेस भरने में भी आप खास तौर से ध्यान रखिए। जो प्रोग्राम आप सिलेक्ट करते हैं तो प्रोग्राम जो आप चाहते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए कि ऑनलाइन प्रोग्राम उन्होंने सिलेक्ट किया है आपके लिए या फिर ऑफलाइन सिलेक्ट किया है। साथ ही साथ एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि देयर इज ए प्रोविजन फॉर फी एग्जेम्पशन। जो बच्चे सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट करते हैं स्टडी मटेरियल्स के लिए, तो उनमें होता है कि 15% डिस्काउंट मिल जाता है, और अगर
कई बार आपको नहीं पता कि जो साइबर कैफे वाले ने या किसी और ने जिससे भी आपने हेल्प लेकर फॉर्म भरा है उन्होंने क्या ऑप्ट कर दिया, और बाद में आप परेशान होते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिल रही है। तो इस चीज़ को अगर आप केयरफुली फॉर्म सबमिशन से पहले चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपका खुद का पोस्टल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने हार्ड कॉपी भरा भी है कि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए और अगर यहाँ से डिस्पैच होने में आपके एड्रेस पे जाता है, लेकिन अगर आपका एड्रेस सही नहीं है तो आपको डिलीवर नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी आप भरे इन्फॉर्मेशन फॉर्म में, सर ने भी आपसे कहा कि जो भी पर्टिकुलर्स आप भरते हैं, प्रोग्राम है आपका, मीडियम की भी कई बार दिक्कत आ जाती है। बच्चे बाद में आते हैं हमारे साथ कहने के लिए कि हमने तो हिंदी मीडियम चूज किया, हमें इंग्लिश की मिल गई, या अदरवाइज इस तरह के वैसे वर्षा कंप्लेन आती है कि हमने कुछ और मीडियम चूज किया, हमारे पास कुछ और आ रही हैं। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो इस तरह की गलती नहीं होगी, और आपको जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं उस तरह से आप प्रोग्राम को प्रोसीड कर सकते हैं और आगे जो टाइमली इस चीज को कंप्लीट कर सकते, ना कि कंप्लेन में ही उलझे रहेंगे कि मैंने कोर्स कुछ और चूज करना था, मैंने कोर्स चेंज कराना है, मेरे एड्रेस पे ये चीजें नहीं आ रही, मेरे मोबाइल नंबर पे ये मैसेज नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपका पोस्टल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका जो भी डिटेल्स पर्टिकुलर्स भरते हैं उसको भरते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिए और सक्सेसफुली आप फॉर्म सबमिट करेंगे। स्कैन डॉक्यूमेंट जो हमने बताया कि क्लियर विजिबल होना चाहिए, जिससे कि डिस्क्रिपेंसी कम से कम आपके पास जाए। हम फॉर्म प्रोसेस के बारे में भी लगे हाथों बात कर लेते हैं कि जब एक बार किसी बच्चे ने फॉर्म अपना सबमिट कर दिया है, उसके बाद हमारे यहाँ रीजनल सेंटर पे भी फॉर्म प्रोसेस होते हैं और CSR से जो हमारा सेंट्रलाइज स्टूडेंट के लिए जो है प्रोसेसिंग के लिए है फॉर्म, तो वहाँ पे भी फॉर्म प्रोसेस होते हैं। सारे रीजनल डायरेक्टर्स के पास में, सारे रीजनल सेंटर्स के पास में उनकी अथॉरिटी है कि वो अपने रीजनल सेंटर्स के फॉर्म्स को प्रोसेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने बच्चों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो होता यह है कि जो भी फॉर्म आते हैं उसकी स्क्रीनिंग होती है बाकायदा, सारे फॉर्म्स को जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं चेक किए जाते हैं कि आपने जो भरा है उसके एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उस प्रोग्राम में जो एलिजिबिलिटी है उस कंडीशंस को आप फुलफिल करते हैं, उससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं या नहीं किए हैं। जब हम ये एश्योर कर लेते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट है कहने का मतलब, और वो फुलफिल कर रहे हैं आप उस प्रोग्राम से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट है, तो हम उस फॉर्म को एडमिशन कंफर्म कर देते हैं। लेकिन अगर किसी तरह की उसमें डिफिशियंसी पाई जाती है, जैसा कि हमने बताया कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है या कहीं किसी स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर या एग्जाम सेंटर की कहीं इशू होती है, अगर आपने ऑफ कैंपस से ये प्रोग्राम किया हुआ, कई बार ऐसा भी होता है जहाँ की वैलिडिटी की दिक्कत आती है, जुरिडिक्शन की इशू आती है, तो इस तरह की कोई भी इशू जब आती है तो हम बच्चों को डिस्क्रिपेंसी मैसेज भेजते हैं, उनके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे जाते हैं ये चीजें, और आपको एक मौका दिया जाता है कि आप उस डिफिशियंसी को रिमूव करें और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको फिर से अपलोड करें। फिर से अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो रीजनल सेंटर से भी टच में रह सकते हैं, रीजनल सेंटर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अगर डिफिशियंसी रिमूव होती है तो हम उसको फिर से देखते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को, उस फॉर्म्स को, और अगर फिर से आपका लगता है कि सब कुछ ठीक है तो हम उसको फिर ओके कर देते हैं फॉर्म्स को, और एडमिशन कंफर्म हो जाता है। जब एक बार आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपके पास फिर मैसेज आता है, आपका एनरोलमेंट नंबर ये है, और आपका कंफर्मेशन का मैसेज एक चला जाता है आपकी ईमेल आईडी, मेल भी जाती है, उनके रजिस्टर ईमेल आईडी पे जाती है, ताकि वो, और उसके बाद स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि अपने जो उन्होंने यूजर आईडी क्रिएट की हुई है उसको यूज करके वो अपने आई कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट लेके लैमिनेट करवा के रख सकते हैं, जिसकी जरूरत बाद में आती है। छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। समय हमारे साथ यही डिमांड कर रहा है कि एक ब्रेक का टाइम हो गया, तो हम मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। Hello learners, in this program I will discuss about the zoning systematic pattern of chemical variation within a solid solution mineral. I am citing an example of feldspar. Feldspar commonly contains two end members,
albite and anorthite. Albite and anorthite, they are present in the form of a solid solution. The change in the chemical pattern of the albite or anorthite rings, as a result of chemical change, you may be able to see the rings of albite, rings of anorthite alternately. As a result, symmetric zoning is formed. Zoning is basically of two types: oscillatory zoning, compositional zoning. Oscillatory zoning is again categorized into two major types, such as reverse and normal zoning. Reverse zoning is also seen in some of the rocks, where the cooling process is again reversed by incorporation of another batch of melt. As a result, reverse oscillatory zoning is also formed. Compositional zoning from core to rim, sectorial zoning or hourglass structure, discontinuities between core and rim is also seen here. This is my own collection from the Deccan basalts, lava flow. It contains plagioclase, and this plagioclase shows ring structure. See here in the center to periphery, there are alternate rings of anorthite, albite, and plagioclase grain is again intersected by another plagioclase grain here. It represents alternate rings of albite, anorthite, and they can be seen by change in the polarization colors of the rings. Compositional zoning indicates, what does it indicate? It indicates rapid crystallization. Rapid crystallization is main reason behind such kind of crystallization. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है ईएमपीसी के इस स्टूडियो में आरएसडी के प्रोग्राम स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में। चूंकि यह प्रोग्राम टू वे प्रोग्राम है, आप लोग के मन में जो भी कुछ प्रश्न उठ रहे हो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से आपका जवाब दे सकते हैं फोन के माध्यम से। फोन जो है टीवी चैनल्स पे डिस्प्ले हो रहे हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। उसके माध्यम से आप जो है हमसे डायरेक्ट रूबरू हो सकते हैं। तो अभी तक जैसा कि डॉक्टर अभिमन्यु जी हम लोग जो है एडमिशन के बारे में बात कर रहे थे, तो एडमिशन के बाद जो बात आती है वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को उसका बेसब्री से इंतजार होता है। तो थोड़ा सा स्टडी मटेरियल के बारे में आप जो है बात जी बता सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से प्रोग्राम में अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप प्रोग्राम में देख रहे थे कि हम एडमिशन की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाते हैं। एक बार जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो जैसा मैंने बताया प्रोग्राम में, आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो आपने क्रिएट किया हुआ है उसको यूज करके अपना आई कार्ड वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको लैमिनेट करवा के रख लीजिए, ताकि आप उसको कभी भी अपने स्टडी सेंटर पे या एग्जामिनेशन सेंटर पे यूज कर सकते हैं। जब भी आपसे पूछा जा सकता है, या कभी भी आप जब हेडक्वार्टर आते हैं किसी काम के लिए, तो कहीं भी आपके आई कार्ड वो काम आएगा। उसके बाद क्या होता है, जैसा सर ने बताया, थोड़ा सा हम एक वो चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो परेशान होते हैं कि उनका जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है आई कार्ड। इवन कुछ दिन पहले भी मैं आपके ऑफिस में विजिट किया था, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं आई कार्ड के लिए।
तो क्या सावधानी उनको बरतनी चाहिए और कैसे जो है अपने पास रखें, उसके बारे में थोड़ा सा। जी, जैसा कि हमने प्रोग्राम के दौरान बताया है कि आप जो आपका वैलिड ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, मैंने पहले भी कहा कि उसको यूज करके आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट करते हैं, उसको कहीं आप नोट करके जरूर रख लीजिएगा। कई बार होता है कि पासवर्ड आप भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आप डाउनलोड या किसी तरह की दिक्कत होती है। तो आप कहीं ना कहीं उसको नोट करके रख लीजिएगा, जिससे कि आपको भूलने का जो होता है कि आप लॉगिन कैसे करेंगे वो दिक्कत नहीं आएगी। तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी एडमिशन कंफर्मेशन के बाद। लेकिन फिर भी मान लिया किसी वजह से कोई दिक्कत हो रही है लॉगिन करने में या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी मदद के लिए या तो आप हमारे पास SRD को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने कंसर्न रीजनल सेंटर को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं इस चीज में, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि हम बताए थे कि जब एक बार आप आई कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके पास वो लैमिनेट करवा के रखिए, आप उसको सेव करके भी रख लीजिए आपके सॉफ्ट कॉपी को कहीं न कहीं अपने कहीं किसी कंप्यूटर में, लैपटॉप, डेस्कटॉप या जहां भी आपको लगता है कि कभी आपको जरूरत पड़ी तो आप वहां से यूज कर सकते हैं। और फिर हमने कहा कि रीजनल सेंटर या SRD को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर जरूरत होती है तो। जहां तक स्टडी मटेरियल की बात है तो स्टडी मटेरियल आपको जैसा हमने बताया प्रोग्राम के दौरान कि आपके जो पोस्टल एड्रेस है उस एड्रेस पे MPDD जो हमारे यहाँ है हेडक्वार्टर में, मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, उनके माध्यम से आपके पोस्टल एड्रेस पे भारतीय डाक द्वारा रजिस्टर पोस्टल के द्वारा कह लें कि भेजी जाती है आपके एड्रेस पे। हाँ, और अगर आपको किसी वजह से नहीं मिलती, ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमें स्टडी मटेरियल्स नहीं मिले हैं, तो वो इसलिए होता है कि जो हम बता रहे हैं कि या तो आपके पोस्टल एड्रेस में किसी तरह की कमी होती या डाक विभाग की अपनी कुछ परेशानियां होती हैं या कुछ लिमिटेशंस होते हैं जिसकी वजह से पोस्टमैन आपके घर तक नहीं ले जा पाते, या ले जाते हैं तो कई बार होता है आपके घर पे कोई नहीं मिलता है तो उनको वापस करना पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि आपका एडमिशन कंफर्मेशन का जब मैसेज आ जाता है तो आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है उनसे आप जरूर संपर्क बना के रखिए, जो आप यहाँ डाकिया लेके जाते हैं डाक, उनको इन्फॉर्म करके रखिए, ताकि अगर किसी तरह की पोस्टल चीजें आपके पते पे आती हैं तो आपको संपर्क करके, अगर आपके घर पे कोई नहीं भी है तो आपको संपर्क कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनके साथ आप शेयर करके रख सकते हैं ताकि आपको डिलीवर हो जाए, मिसप्लेस की चांसेस कम हो और वापस भी आने के चांसेस कम हो। अगर आपको डिलीवर हो जाती है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि इन सब सावधानियों के बाद भी कई बार होता है कि आपका डिलीवर नहीं हुई, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, आपके पते पे कोई नहीं मिला, तो क्या होता है कि जो स्टडी मटेरियल्स को वापस भेज दिया जाता है। इसमें आप अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से आप अपनी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो फिर MPDD को आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी परेशानी उनसे साझा कर सकते हैं। इसमें सब क्या स्टूडेंट्स को ये जानकारी मिल पाती है किसी माध्यम से कि उसका स्टडी मटेरियल डिस्पैच हो गया है, वो कहाँ से ये जानकारी प्राप्त कर सकता है? जी, ये MPDD का जो उनका है वो साइट है। इवन रजिस्ट्रेशन अपना चेक करें तो उसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे भी वो देख सकते हैं स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस करके आता है, उसको क्लिक करके अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको जो है दिखाई देगा कि अगर आपका स्टडी मटेरियल डिस्पैच हुआ है तो वहां पे डिस्पैच नंबर और वो रहेगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है तो स्पीड पोस्ट नंबर रहता है जिसको कि आप जो है इंडियन पोस्टल उससे ट्रैक कर सकते हैं। भारतीय डाक से डाक नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होता है, तो जैसा कि आप बताए थे उसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर किसी ने सॉफ्ट कॉपी यूज किया है, प्रोग्राम में ये भी बात आई कि अगर स्टडी मटेरियल जब तक नहीं मिलता तब तक क्या करें, तो हमारे इग्नू की तरफ से जो है मोबाइल कंटेंट ऐप की बात जैसे ई कंटेंट ऐप के माध्यम से आप कहीं भी स्टडी मटेरियल्स को एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ ई ज्ञान कोश पे भी जैसे आपने बताया कि ई ज्ञान कोश के माध्यम से भी स्टडी मटेरियल्स के सॉफ्ट कॉपी को आप कहीं भी एक्सेस करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये दोनों ही जो ऑप्शंस आपके पास हैं, जब तक कि आपके पास प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स नहीं आती हैं, और जो सॉफ्ट कॉपी वाले बच्चे हैं जिन्होंने सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट किया तो उनके पास तो स्टडी प्रिंटेड मटेरियल आती नहीं है, तो उनके लिए दो माध्यम है जिसके माध्यम से वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या हमारा कुछ स्टडी मटेरियल ऐसा भी है जो वीडियो मोड में भी है, लेक्चर के माध्यम से भी वो देख सकते हैं? ऐसे तो जी, उसके लिए जैसा कि EMPC की बात हम लोग कर रहे हैं जहां के माध्यम से ये प्रोग्राम भी लाइव जा रहा है, तो इनके पास बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हैं जो एकेडमिक कंटेंट से रिलेटेड हैं, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं।
साथ ही साथ जो लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स लाइव प्रोग्राम होते हैं, ज्ञान दर्शन और ज्ञान वाणी जो हमारा रेडियो चैनल है, इन प्रोग्राम्स के माध्यम से भी आप प्रोग्राम्स को जो है काउंसलिंग और देख बाकी सकते हैं। देख सकते हैं रिकॉर्डेड हमारी काउंसलिंग या बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे वीडियो जी जी, उनकी कैटलॉग भी अवेलेबल है। अवेलेबल है, जो कि स्टूडेंट ई ज्ञान कोश पे जाके भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है बहुत सारे हमारे डिटेल। तो अब सर मैं आपसे जानना चाहूंगा असेसमेंट के बारे में, आप थोड़ा बताएं कि इग्नू में क्या सिस्टम है और किस तरह से जो है इवेल्युएशन किया जाता है छात्रों का। ठीक है डीपी सिंह साहब, आपने असेसमेंट के बारे में पूछा, मैं थोड़ा सप्लीमेंट कर लूँगा स्टडी मटेरियल के बारे में। स्टडी मटेरियल इज डिस्पैच डायरेक्टली फ्रॉम द एमपीडीडी, और इन केस यदि आपके घर पर नहीं मिल पाते हैं और पोस्टल रिटर्न होता है तो वो कंसर्न रीजनल सेंटर में जाता है। यदि इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ चेन्नई, so then material will not come to the MPDD, it will deliver to the Chennai Regional Center and you may contact to the concerned regional director for the पैकेट्स। जैसे डॉक्टर अभिमन्यु जी ने बताया कि आप ट्रैक कर लीजिएगा अपना स्टडी मटेरियल, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द मटेरियल, स्टेटस डिस्पैच स्टेटस देख लीजिएगा। यदि इन केस इट हैज बीन नॉट डिलीवर्ड एट योर रेजिडेंशियल एड्रेस, तो यू मे कॉन्टैक्ट टू द कंसर्न रीजनल डायरेक्टर और रीजनल सेंटर सो दैट यू मे गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ द स्टडी मटेरियल। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका मटेरियल जहाँ तक हम लोग भेजते रहते हैं, बट इन केस जब तक मटेरियल नहीं मिलता है, आप ई ज्ञान कोर्स पर हमारा मटेरियल ऑनलाइन सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप पढ़ना शुरू करिएगा। एंड दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट डिवीजन। स्टूडेंट्स के लिए 3 इम्पोर्टेंट डिविजन्स होते हैं, एक एडमिशन डिवीजन, दूसरा एमपीडीटी एंड थर्ड इवेल्युएशन डिवीजन। एमपीडीटी एंड ऑल द 3 डिविजन्स आर हेडेड बाय द रजिस्ट्रार। द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन का क्या काम है? इट मेंटेन द टोटल डाटाबेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड री रजिस्ट्रेशन एट द हेडक्वार्टर लेवल, जितने भी एडमिशन्स होते हैं उनका पूरा। एमपीडीटी का पूरा है कि दे मेंटेन द डाटाबेस ऑफ द सप्लाई ऑफ द स्टडी मटेरियल, डिलीवरी ऑफ द स्टडी मटेरियल। एंड थर्ड डिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन, इवेल्युएशन डिवीजन। इट इज ऑल्सो हेडेड बाय द रजिस्ट्रार, इवेल्युएशन डिवीजन। अब जैसे आपने बताया कि व्हाट इज द असेसमेंट सिस्टम, तो इग्नू फॉलोज द 3 असेसमेंट सिस्टम, सेल्फ असेसमेंट, सेकेंड इंटरनल असेसमेंट एंड थर्ड इज एक्सटर्नल असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट जो होता है वो चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइजेज आर गिवन इन द स्टडी मटेरियल, और वो आपको करना चाहिए स्टडी मटेरियल में। चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइजेज दी होती हैं, आप अपने आप करिएगा। एंड विद द हेल्प ऑफ द मॉडल आंसर विच इज गिवन इन द आफ्टर द ब्लॉक, ईच ब्लॉक में मॉडल आंसर दिए जाते हैं, उससे आप यू कैन कंपेयर योर आंसर वेदर इट इज करेक्ट, और जो भी डिस्क्रिपेंसी है, डेफिशिएंसी है, जो कमियां हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये असेसमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ द सेल्फ इंस्ट्रक्शन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का सिस्टम। दैट इज वाई सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहा जाता है इसको, कि उसमें ही सब कुछ टीचर इज इनबिल्ट। तो आप अपना आंसर कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मॉडल आंसर। दिस इज नोन एज द फर्स्ट असेसमेंट सिस्टम, इज अ सेल्फ असेसमेंट, बट इट डू नॉट कैरी अ वेटेज फॉर द पासिंग मार्क्स। पासिंग एग्जामिनेशन के लिए कोई वेटेज नहीं होता है, बट इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट, इट मस्ट बी, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज रिक्वेस्ट, इट इज एडवाइज फ्रॉम द आवर लेवल टू डू the check your progress exercise yourself. Second assessment system is the internal assessment. Internal assessment is done through the assignment. असाइनमेंट जो होते हैं वो इंटरनल असाइनमेंट है, एंड इट कैरीज द वेटेज ऑफ द 30% फॉर द पासिंग द मार्क्स। और ये असाइनमेंट इज मैंडेटरी। यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट एट योर स्टडी सेंटर, जो भी अपने स्टडी सेंटर है आप हार्ड कॉपी में सबमिट कर सकते हैं, और कुछ रीजनल सेंटर्स में ऑनलाइन भी मंगाए जाते हैं, तो वो उनका गूगल फॉर्म बनाया जाता है, उसके में भेज सकते हैं। उसके लिए आप कंसर्न रीजनल सेंटर से बात कर सकते हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना असाइनमेंट
अपने स्टडी सेंटर में जमा करें, जिससे कि उसका जल्दी से जल्दी इवेल्यूएशन कराया जा सकता है. इट कैरीज ए वेटेज ऑफ द 30% ऑफ द फॉलोइंग. इट इज मैंडेटरी एंड विदाउट द सबमिशन ऑफ द असाइनमेंट यू कैन नॉट अपीयर इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन. तो ये इट इज मैंडेटरी. आपको करने के पहले, हाँ, फॉर्म करने से पहले यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट एट योर स्टडी सेंटर. आपको करना ही करना है, चलना है. असाइनमेंट सबमिशन के लिए गाइडलाइंस, हाँ, गाइडलाइंस जो है मैं आ रहा हूँ डीपी सिंह साहब. अभी जैसे जहाँ तक जुलाई एडमिशन का, दिसंबर का जो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर लास्ट डेट है असाइनमेंट अपना सबमिट करना है. जिन्होंने एडमिशन नया लिया है एडमिशन, वो अपना 31 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं. जिन्होंने सेमेस्टर बेस, हाँ, और जनवरी में जिन्होंने एडमिशन लिया, जनवरी 2023 एडमिशन में जो ईयरली एडमिशन हुआ है, उन्होंने BA BCom मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, उनके लिए भी लास्ट डेट 31 अक्टूबर तक आप अपना असाइनमेंट अपना दिसंबर जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है उसमें सबमिट कर सकते हैं. इट कैरीज ए वेटेज ऑफ द 30% ऑफ द पासिंग मार्क्स. और ऐसे ही फाइनल प्रोजेक्ट भी आप जमा कर सकते हैं. और ये इसके लिए, और जहां तक थर्ड असेसमेंट सिस्टम की बात आती है, असेसमेंट सिस्टम की बात आती है, इट इज डन थ्रू द टर्म एंड एग्जामिनेशन. As you know, IGNOU conducts the examination twice in a year, June and December. 1st June और 1st December से हमारा एग्जामिनेशन होता है. इट इज शेड्यूल्ड, आपकी वेबसाइट पर हमारी डेट शीट पड़ी रहती है. 1st June, और इन केस देयर इज ए संडे ऑन 1st June और 1st December, द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन 2nd. अदरवाइज 1st June एंड 1st December से हमारा एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन शुरू हो जाते हैं और आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं. और इट इज जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स की भी लास्ट डेट हमारी अभी है 15 अक्टूबर तक आप जमा कर सकते हैं. और इट कैरीज वेटेज ऑफ द 70% पासिंग मार्क्स. तो जो 70% मार्क्स जो हमारा एक्सटर्नल असेसमेंट के थ्रू होता है, टर्म एंड एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, और इंटरनल असेसमेंट के थ्रू 30% एंड वेटेज. तो 30% जो असाइनमेंट आपको घर से करना है. बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बरबेटा स्टडी मटेरियल से ना निकालें, उसको लिखिएगा, ना किसी से चीटिंग करिए. आप अपने ओन वर्ड्स में लिखिएगा और अपने असाइनमेंट सबमिट करिए स्टडी सेंटर पर. तो 30% इंटरनल असेसमेंट और दोनों का मिला के आपको पासिंग मार्क्स ग्रेड कार्ड इशू करती है. सर, एक चीज इसमें जानना चाहेंगे, ये जो टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है, तो ये क्या ODL स्टूडेंट्स के लिए है या जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही डेट है? जहाँ तक सवाल ODL एंड ऑनलाइन सभी के लिए, अभी तो दोनों का ही साथ में ही है. 15 अक्टूबर है आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करने की. ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, IGNOU की वेबसाइट पे जमा कर सकते हैं. और पर कोर्स 200 रुपीज फीस जमा करना होता है विद्यार्थी को. और यदि आप इनकेस यदि 15 अक्टूबर तक नहीं जमा कर सकते, वैसे तो मैं कहता हूं कि आप जमा कर दीजिए एग्जामिनेशन फॉर्म. यदि इनकेस नहीं करते तो 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक विद लेट फीस ऑफ 500 यू कैन सबमिट ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म. आप अपना IGNOU की वेबसाइट पर एग्जामिनेशन फॉर्म जमा कर दीजिएगा. और ऐसे ही यदि इनकेस फिर भी कुछ कारण से आप 25 अक्टूबर तक नहीं जमा कर सकते तो 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आप 1100 रुपये लेट फीस करें. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म विद इन द डेट 15 अक्टूबर तक जमा कर दीजिए फॉर दिसंबर टैग. द स्टूडेंट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर दिसंबर, प्लीज सबमिट your examination form by 15th October to avoid the late fees. तो 200 रुपीज लेट फीस के साथ अपना पर कोर्स 200 रुपीज पर कोर्स के हिसाब से यदि 4 कोर्सेज का इम्तहान देना है तो 800 रुपीज का ड्राफ्ट नहीं, आपको ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से हमारी वेबसाइट पर जमा कर सकते हैं. इसके अलावा सर, अगर आप एग्जाम फॉर्म टाइमली सबमिट करते हैं तो सबसे बड़ी उसकी क्या खासियत है कि आपको जो है अपना चॉइस का एग्जाम सेंटर भी मिल सकता है. जी हाँ. एक्चुअली सर, एग्जाम सेंटर्स में जो है सीट लिमिटेड होती है. लिमिटेड सीट्स के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑप्शन मिलता है. तो अगर आप जो है जितना डिले करेंगे तो आप जो है अपने चॉइस का या नियर बाय जो आप एग्जाम सेंटर चाहते हैं वो आपको मिलने में मुश्किल आ सकती है.
और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, स्टडी सेंटर और एग्जामिनेशन सेंटर वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट का सेम होता है, परंतु अलग भी हो सकता है। यदि ये नहीं कंफ्यूजन बहुत से स्टूडेंट्स के साथ हमारे सामने आता है, मैं एज ए रीजनल डायरेक्टर में देखता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स आते रहते हैं कि मेरा स्टडी सेंटर है, मैं इम्तहान चेन्नई से देना चाहता हूँ या कोयम्बटूर से देना चाहता हूँ या कहीं से, तो यू कैन ऑप्ट एग्जामिनेशन सेंटर इन द पर्टिकुलर कंसर्न रीजनल सेंटर में जमा कर सकते हैं। उसमें आप इग्नू की वेबसाइट पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। आप अपना चॉइस एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन कोड डाल सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ एग्जामिनेशन हो रहा हो उसको पर्टिकुलर। जहाँ तक कोशिश होती है कि सारे हमारे जहाँ जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ हम लोग एग्जामिनेशन कराते हैं, और आप अपना चॉइस एग्जामिनेशन, जैसे डीपी सिंह साहब ने बताया कि जब लास्ट डेट यदि 15 अक्टूबर है तो 15 अक्टूबर तक आपको यदि चॉइस एग्जामिनेशन फॉर्म सेंटर लेना है तो आप जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन फॉर्म का, तो किनका एग्जामिनेशन ड्यू है, जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में एडमिशन लिया है जनवरी 2023 में ईयर वाइज है, उनका दिसंबर में एग्जामिनेशन, और जिन्होंने सेमेस्टर सिस्टम में एडमिशन लिया है जुलाई वाले का भी एग्जामिनेशन हमारा दिसंबर में एग्जामिनेशन होता है। तो हमें जहाँ तक असेसमेंट सिस्टम की बात आई, ये थ्री टाइप्स ऑफ असेसमेंट सिस्टम है, सेल्फ असेसमेंट, internal assessment and external assessment. Self-assessment do not carry any weightage for the passing examination. Internal assessment carries a weightage of 30% of the passing examination, and the external assessment is done through the term and examination. उसके अलावा भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह के भी एग्जामिनेशन अब भरना होता है, फॉर्म वगैरह भरना होता है, तो उसके भी लास्ट डेट 30 नवंबर है। विद्यार्थी अपने 30 नवंबर तक प्रोजेक्ट, अपना फील्ड वर्क, अपना डेजर्टेशन, इंटर्नशिप वगैरह 30 नवंबर तक जमा कर सकते हैं 2023 तक। और जहाँ तक फीस की बात आती है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की फीस भी इस बार इंट्रोड्यूस की है यूनिवर्सिटी ने, पहले लास्ट ईयर से ही किया है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फीस भी है, यदि 4 क्रेडिट का कोर्स है अप टू 4 क्रेडिट के लिए 300 रुपीज यू हैव टू पे, और यदि 4 क्रेडिट से ज़्यादा है तो 500 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। और यदि आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में आपने प्रैक्टिकल के लिए नहीं फीस जमा की है तो यू विल नॉट बी परमिटेड फॉर द अपियरिंग इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ऐसे ही प्रोजेक्ट के लिए भी यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है कि अप टू 4 क्रेडिट 300 रुपीज़ फीस, एंड अबव 4 क्रेडिट आपको 500 रुपीज़ यू हैव टू पे। तो आप ध्यान रखिए, लोग बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं थ्योरी के एग्जामिनेशन फॉर्म में तो भर देते हैं, बट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का नहीं भरते हैं, तो वो डिप्राइव हो जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसी एग्जामिनेशन सेंटर पे हो, उसके लिए हम लोग अलग सेंटर एक बनाते हैं, एक कंसोलिडेटेड स्टूडेंट्स को मिला के हम एग्जामिनेशन तो हो जाएगा, थ्योरी एग्जामिनेशन हो जाएगा, बस प्रैक्टिकल के लिए वी सजेस्ट ओनली लिमिटेड सेंटर्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको प्रैक्टिकल की भी फीस भरनी है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की भी फीस भरनी है, और साथ साथ थ्योरी एग्जामिनेशन की फीस भी भरनी है, और प्रोजेक्ट की फीस भी जमा करनी है। तो कहने का मतलब है सर कि उनकी क्लबिंग करते हैं स्टूडेंट, क्लबिंग करके, क्योंकि सारे प्रोग्राम में प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं होता हो सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स में ही हमारे यहाँ जैसे BLIS वगैरह में होता है, BLIS है, MCA BCA वगैरह में बहुत सारे प्रैक्टिकल, इनमें जो है बैच बनाने के लिए क्लबिंग करना, इवन कई बार जो है रीजनल सेंटर लेवल पे भी होता है, जैसा कि सर आपके डायरेक्शन में दिल्ली NCR के BSc प्रैक्टिकल्स बहुत सारे बहुत से हम लोगों ने नोएडा रीजनल सेंटर में कराए हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को कराया हम लोगों ने, जो ओल्ड BSc के स्टूडेंट्स के भी हम लोगों ने शेड्यूल किए हैं बहुत सारे। तो ये चीज जो है बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपका सेंटर है वहीं एग्जामिनेशन हो, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज पर द कन्वीनियंस, as per the availability of the practical centers, और साथ साथ वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी के आसपास के। ये ज़रूरी नहीं कि आपका यदि श्रद्धानंद कॉलेज में ही आपका प्रैक्टिकल होगा तो वो ज़रूरी नहीं श्रद्धानंद कॉलेज या दिल्ली में ही है, आपको गाजियाबाद में भी प्रैक्टिकल हो सकता है, गुड़गांव में भी प्रैक्टिकल हो सकता है, एज पर दी रिक्वायरमेंट एंड एज पर दी प्रैक्टिकल अवेलेबिलिटी इज कंसर्न, और उनकी लैब की अवेलेबिलिटी पर भी फर्क पड़ता है। तो अभी मुझे नोडल RC नोएडा को बनाया था, ओल्ड BSc के स्टूडेंट्स का हम लोगों ने प्रैक्टिकल कराए, और बहुत सारे हमने जैसे
BLIS का ये भी हम लोगों ने किया है पूरा NCR का, तो इस तरीके का चलता है नोएडा में। और बाकी के भी रीजनल सेंटर्स जो हैं वो दे कंडक्ट्स द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑन दी कंसोलिडेटेड मैनर ऑन क्लबिंग बेसिस पर करते हैं जी। और सर अभी जैसा एग्जाम के लिए आप बता रहे थे कि जो स्टूडेंट एग्जाम, मान लीजिए कि दिल्ली का स्टूडेंट है, अगर वो फॉर्म फिलअप करना चाहता है, चेन्नई में एग्जाम देना चाहता है, तो वो एग्जाम फॉर्म में ही अपना जो है एग्जाम सेंटर कोड चेन्नई का डाल सकता है। जी जी। इसके अलावा और ये जो है, जो चूंकि ज्यादातर हमारे यहाँ पहले सर्विस क्लास के लोग एडमिशन लेते थे और ट्रांसफरेबल जॉब में होते थे, तो उनके लिए एक अच्छी सुविधा है कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपने अपना एग्जाम सेंटर अभी सेलेक्ट किया है और मीनवाइल दिसंबर में आपका ट्रांसफर हो गया, तो उस दौरान भी आप रजिस्ट्रार SED या कंसर्न रीजनल डायरेक्टर को जो है आप मेल करके या उनसे कांटेक्ट करके आप अपना एग्जाम सेंटर रिक्वेस्ट कर सकते हैं चेंज के लिए। तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ द ये इग्नू इज ए वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली सिस्टम। हमारा जहाँ तक सवाल है, इजीली आपके एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट वी कैन चेंज, वी कैन एकोमोडेट स्टूडेंट। जहाँ तक सवाल है, यदि फॉर एग्जांपल आर्मी पर्सनल्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे सिविल सर्विसेज वगैरह में हैं, उनके फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म किसी भी जगह भर सकते हैं, बट इन केस उन दिनों में वो एग्जामिनेशन सेंटर पे अवेलेबल नहीं है, तो वो कंसर्न रीजनल सेंटर, जैसे DP सिंह साहब ने बताया, वो कंसर्न रीजनल डायरेक्टर से या रजिस्ट्रार SED से रिक्वेस्ट करके अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करा सकते हैं। परंतु तब वो उस केस में तभी परमिशन मिलेगी सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर और की वैलिडिटी होगी, तभी हो सकता है। तो ये चीज बहुत अच्छा है विद्यार्थियों के लिए। परंतु हमारा शेड्यूल, जैसे मैंने सबसे पहले दिन में ही कहा था कि हमारा शेड्यूल बहुत पहले से डिफाइंड है। आप अपनी जैसे जून और वगैरह में जो BA वगैरह के विद्यार्थी अपने पेरेंट्स के साथ घूमने वगैरह जून में छुट्टियों में जाते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंगली अपने जहाँ भी जा रहे हैं पेरेंट प्लान कर सकते हैं अपना एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ जा रहे हैं। परंतु यदि इन केस नहीं जा सकते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, परंतु सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका राइट नहीं हो जाएगा चेंज करने का, बट आप यू कैन request to the concerned regional director or concerned registrar SED for the change of examination center, परंतु हो जाता है। ये एक तो इस तरीके की बात है। साथ साथ में और विद्यार्थियों को यही बताना चाहता है, यदि विद्यार्थी जैसे कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम और डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में क्या मेजर क्या है कि यदि सपोज आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिया, तो आपको ऑल द 3 years यू हैव टू कंप्लीट, और 4 जो भी 4 साल का या 3 साल का कोर्स है, आपको वहीं रहना है। यदि आपके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो जाता है तो आप नहीं जा सकते, उनको फिर हॉस्टल वगैरह में या कहीं रखना पड़ता है विद्यार्थी को। बट इन केस ऑफ द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इन केस ऑफ द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यू कैन इजीली सेंड ए रिक्वेस्ट टू द कंसर्न रीजनल सेंटर, रीजनल डायरेक्टर टू द चेंज ऑफ द रीजनल सेंटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरी चीज, हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिस्टम है, जो भी स्टडी मटेरियल इज आइडेंटिकल, और वो हम सेम मटेरियल, वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी स्टूडेंट। जो दिल्ली का स्टूडेंट और चेन्नई का स्टूडेंट या एक छोटे से गांव का मैनपुरी का स्टूडेंट या इटावा का स्टूडेंट या कहीं का भी एक छोटी सी प्लेस का भी स्टूडेंट है, यदि वो स्टडी मटेरियल मिलेगा तो ही विल गेट द सेम स्टडी मटेरियल, एंड वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी, एंड वी प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स टू कम, अपने सामने आइए, पढ़ाई लिखिए, करिए। सामान हमने सुविधाएं दी हैं। समय थोड़ा कम है, तो हम जो है एक बार चाहेंगे कि एडमिशन से रिलेटेड जो लास्ट डेट की आप बता दें, उसके बाद हम लोग जो है, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि जुलाई 23 के लिए एडमिशन की लास्ट डेट 10 अक्टूबर है, जो कि आज ही है। जो भी बच्चे अगर अभी तक नहीं कर पाए हैं तो आज का दिन है, आप कभी भी करके अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के लिए भी जिनका सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर के लिए ड्यू हो रखा है और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, तो वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विथ लेट फीस ऑफ 200।
तो ये है दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो है एडमिशन से रिलेटेड। बहुत और बहुत फिर बहुत एक धन्यवाद एक एक डॉक्टर फिर एंड में फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज मत करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट आपको सब। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों के यहाँ आने के लिए और टेक्निकल सपोर्ट के लिए एमपीसी इग्नू को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। We welcome you to join the bouquet of programs offered by the School of Humanities, the Indira Gandhi National Open University, New Delhi. The Indira Gandhi National Open University, New Delhi is a mega university today. It was created by an Act of Parliament in 1985. It is the world's largest university with an enrollment of about 3.5 million current students and 3.2 million alumni. Ignou has also been accorded the highest grade of academic excellence, A++, by the National Assessment and Accreditation Council, or the NAC. Now, during your time at Ignou as a learner, we will help you complete your program of study with world-class printed materials, audio and video programs. We have more than 35,000 academic counselors who will guide you till you complete your program of study. We also provide live interaction with your teachers at the headquarters via teleconferencing mode and live interactive radio counseling besides this, supported by regular TV and radio broadcasts. The School of Humanities was created in 1988, and we welcome you warmly to join any of our programs of study. Ignou degrees, diplomas and certificates are recognized not only in the country but are also very well received across the globe. We look forward to your journey with us, and we welcome you once again. The School of Humanities of the Indira Gandhi National Open University offers more than 26 ODL programs, which is open and distance learning programs, and now more than 10 online programs. A very interesting feature that we have, a very interesting program that we have on offer right now is the BA English Honours. Now, in this particular program, what we've done is we've taken a large number of courses from English, which means is English as a discipline. And then we have also put in other interdisciplinary and skill-based elective courses. So all of them combine to give you the BA English Honours, which gives students the exposure to subjects which is related to English literature as well as other disciplines, and it will introduce you to various aspects of literature through the core, the discipline centric, the ability, as well as the skill enhancement and generic courses. Now, it also exposes learners to the importance of interdisciplinary study, which is in keeping with the National Education Policy 2020. And how do we do this? Because we enable learners to opt for courses which are outside their discipline, not just from English. Now, the eligibility for this program, the BA English Honours, is you need to have a 10+2 grade. And for those students who do not have 5 subjects, 5 core subjects, right? Especially if they have a SUPW course as the 5th subject, they need to pursue one senior secondary level course from the National Institute of Open Schooling.
Namaskar. Welcome in today's session. Today's session is about Diploma in Apparel Merchandising Applied. This program is in collaboration with NSDC. This program is offered by School of Continuing Education in subdiscipline of Fabric and Apparel Science. This program is on offer in present admission cycle. This program is all about apparel merchandising. Apparel, that is garment, dresses, clothing. And merchandising is selling something, selling product to the consumers. So apparel merchandising is all about selling apparel product. In this program, the NSDC is collaboration and provide training and skill development skills. So all about the NSDC, the Dr. Richa will discuss about the NSDC. Dr. Richa. Thank you. When we use the word skill, the skill word means expertise. So whenever we need an expertise, we use the word skill synonymously to that. So talking about NSDC, NSDC is National Skill Development Corporation. Now this is an organization which basically deals with the skill and vocational education. And Ignou along with NSDC has recently in July 2023 session launched this course, the program of Diploma in Apparel Merchandising Applied. Now the NSDC operates under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. The NSDC is a private-public partnership organization established to promote and facilitate skill development and vocational training initiatives in India. It partners with training providers, industry associations, and employers to create skill development programs and meet the demands of the job market. The primary objective of the NSDC is to bridge the skill gap in the Indian workforce by providing training and certification programs in various sectors and industries. Now, we all know about NEP 2020. In fact, the whole country is talking about NEP. So while NEP and NSDC has similar mandates and focuses, slightly different in fact, they are related in the sense that they both aim to enhance the employability and career prospects of individuals in India. As NSDC is providing the training in this program, the NEP guidelines says talk about the hands-on training and employability. NSDC is focusing on the hands-on training. So in this program, they provide work centers for the internship. So the objective of NSDC, what are the objectives? So there are various objectives for this program, this Diploma in Apparel Merchandising program applied, which is in collaboration with NSDC. And the first objective is understand the importance of textiles and apparel industry. The second one is understanding of processes all the way from design to finished products. Now, whenever we talk about apparel and textile industry, we have to understand what is the significance, what is the importance of the clothing and the apparel industry, and also the whole process that goes behind that. So right from the designing, the program that we are talking about here is Diploma in Apparel Merchandising. Now Dr. Anuradha has already talked about what is apparel and what is merchandising. So merchandising is basically a process where right from the beginning, right from the initiative, the idea of a product, it goes until the production and the sales and the marketing of that particular product. So to understand the whole process of right from the design stage till the finished goods is also one of the major objectives of this program. To gain basic knowledge of textile fundamentals and also to develop entrepreneurship.
So one has to have the basic knowledge of textile fundamentals, textile fibers, because as we say that, every clothing, every apparel that we are wearing, it is made up of something, and that something is called a fiber. Fiber converts into yarn, yarn converts into fabric using various techniques like weaving or knitting or etc. And so it is very important to understand the technical, the fundamentals of how a product or how a fabric textile is made. And when we talk about entrepreneurship is something whenever there is an idea and one has to put it into a product or into an enterprise, that is called entrepreneurship, and the person who does that is known as an entrepreneur. So knowing about that is also important. So the main objective of NSDC is providing the skill to the learners, and they can develop their business and they can earn from their skills. Yes, absolutely. So NSDC provides a very viable resource, I would say, to facilitate these, the hands-on training part of the program, of this particular program. And there are other two objectives to this program, that is enable the learners for a good career option in apparel design and marketing sector, and understanding the business plan. Now we are talking about merchandising, where we are saying that it involves right from the fiber stage to the production and the completion of that particular product. So whenever we market something, whenever we make an entrepreneurship, we are as an entrepreneur, if I'm making a product or having my own business or startup, knowing having the knowledge of the business plan is also very important, because just having an idea is not enough. One has to put that idea into planning, and then it has to be implemented, and steps has to be taken to make that product into a 3D something, a commodity that you can hold on to, basically. So having that business plan is also an integral part, an integral objective of this program. Now, the level of this program is diploma, as we have already said that. The eligibility is 10+2 or its equivalent examination of a board recognized by Ignou. The medium of instruction would be English. There are 40 credits in this course, in this program. Duration of the program, minimum would be 1 year, maximum 3 years. And the school providing this program is School of Continuing Education. And the sub-discipline here is Fabric and Apparel Sciences. The fee structure of this program is, for NSDC, you have to pay 8,000 because they comprise the work centers for the internship, and for Ignou, there is a 4,000, and total of this fee structure is 12,000. So if you want to enroll in this program, you have to go to the NSDC site and pay the NSDC component, and then come to the Ignou site and pay for 4,000 for Ignou component, and the total of the rupees fee 12,000 you can enroll in this program. Now, there are lots of benefits to this program. Let's talk about what you are going to gain out of this program when you then enroll yourself into it. So there are certain benefits that we have jotted down. Enhanced knowledge and skills. So as we have already mentioned that this program has been launched in collaboration with National Skill Development Corporation. So the name itself talks about skill development. So there will be lot of hands-on training, practical training, and skill would be developed, professional development and competitive advantage. So a lot of professional development will be there, because the theory that we gain in the books sometimes at times is not enough. So having that to develop professionally, having the hands-on knowledge is very important, and of course there's competitive advantage to this. As the NSDC is providing hands-on training in the internship, you have to gain knowledge about the different skills like product development, stitching, and management. And this program is prepare you for a competitive world, as the job scenario of this in apparel field is very much exhausted, and if you have hands-on training and some professional skills, you will absorb in the industry quickly. So the other advantages of this program is networking opportunity. When you go to the internship and work in the work centers, you get connected with the professionals of the industries, and you get better career opportunities and hands-on experience, which make you a
a knowledgeable and professional and skilled person for the industry, and you get jobs quickly in the apparel industries. Now we discuss about the program structure of this program. So, the Diploma in Apparel Merchandising Applied has 5 courses. Now, 3 courses are theory, 1 is internship, and 1 is practical. So, we will just show you a flowchart which gives you the knowledge of how the how the courses are being divided. So, the first course is Basics of Apparel Industry and Entrepreneurship, and it is for 8 credits. The second course is for Fashion, Textiles, Product Development, and Merchandising, and that again carries 8 credits. The third course is also of 8 credits. That is Management of Merchandising, Function and Apparel Manufacturing. Coming to the hands-off training, the one that will be provided by NSTC, that is Internship and Practical. The internship course carries 12 credits and the practical carries 4 credits. Now, when we say 12 and 4, what happens here is the 4 credit that we will it will be there for the practical, will be done as a part of the internship. So once you enroll in this program, once you join this program, you will be given skill centers from NSTC, and you have to go to these centers. We will be showing you a list of these skill centers which are there available right now in various cities and states, and one can join these, and along with the internship itself you can do the practical part. So that's about the structure of this course. Now, the internship, as I already mentioned, that the internship and practical both will be provided by NSTC to the enrolled learners. The program attempts to integrate knowledge and skills in the field of merchandising. So, an overall skill development will be given to all the learners, but the major focus will be on the merchandising part. As the program structure says, this program have 3 theory courses in which you have the whole knowledge about the textiles, merchandising process, skills the merchandiser have, and the product development and how to work in the industry. So the next course is about the internship, in which you get the hands-on training in the work centers of NSDC. In this program, in this course, you have to work in the apparel industries, and you have to understand the work process in the apparel industry, how the products are made, how the ready-made garments are made, how the thousands of pieces are developed in a short time period, so that maximum number of consumer can get this product in the market. The main objective of this internship course is to apply theoretical knowledge to the practical study of apparel merchandising, to understand workflow of apparel merchandising in apparel industries, to develop understanding of apparel merchandising in terms of buyer deals, sourcing of apparel, production process, and so on. So the internship is basically for the hands-on experience and how the person will work on the apparel industry, how the product is developed. So the main objective of this internship is to understand the work process of the apparel industry. And there are certain other objectives also which are pretty important, and those are to build managerial skills. When we are talking about skill development, of course, that is another, very integral part of the whole internship process. So another objective is to build managerial skill to handle the buyer deals and dispatch their products in time, to understand the international trade and finance in terms of apparel industry, and to develop entrepreneurial skills and to identify the business opportunities and create new enterprise. Now we are talking a lot about entrepreneurship and skill development. So when we say, when we use the word entrepreneurship, it's about developing, as we have already mentioned, developing a new a product or commodity or even an enterprise also. And it's very important to have that managerial skill, because you are one is going to develop a new business, a new product, and to manage the whole thing. So that skill also is being provided during this internship. So once you join a skill center, once you join an industry, what happens is, apart from you are getting the theoretical knowledge from the books that will be provided to you, along with that you are getting the practical hands-on knowledge from the industry, and also it's like an overall grooming that happens to with you, all the enrolled learners, when you go to the internship center, when you join the skill center. So these things are very important.
And there are various list of work centers that have been provided by NSTC, which Dr. Anuradha will talk about. And different kind of list work center the NSDC will provide you for the internship. There are 13 work center for the first cycle of admission in this program. There are different state like Varanasi, UP, Bihar, West Bengal, and the maximum number of work center from the West Bengal and the Bihar. So you can choose your work center according to your location, and it is mandatory that you have to take a internship from the NSDC centers only. They will provide you a stipend for amount 2,000 to 5,000 according to the industries, and if you get the work center at your location, you will be comfortable to work in the apparel industries at the work centers only. So NSDC will provide you a contact person name of the industry, and you can contact the person and ask about the works, how to start the internship at their centers. So Dr. Richa will tell us how the training will be executed in the work centers in the NSDC centers. Right. So as we have already mentioned and showed you on screen that as of now, there are 4 to 5 states which are providing the skill centers. So once you enroll in this program, once you pay the fees for NSTC and Ignou, you will be will be working as a enrolled learner in this program, and once you finish the theory courses, you will be given the skill centers from NSTC, and the contact person, the addresses, everything will be there in the program guide for Dapper in Apparel Merchandising Applied program. You can go through it. And when we talk about the internship, as we have already mentioned, it will be provided only and only in the above centers of NSTC. Now, there are no more centers that are being provided apart from these 13 centers that you have seen on screen or which are mentioned in the program guide. In case one is looking, or an enrolled learner is looking for another center in some other city or state, that person has to search for their own skill center, their own industry, and work on their own and do their internship. And also the stipend that we have just talked about, that stipend is provided by NSTC when you join this program. So if you are not enrolled in one of these centers provided by NSTC, then the stipend is difficult for you to be procured. It will be difficult. And also what you can do is, in case you look for your own center, you can contact NSTC. The number is on the screen of your TV or your screens, and you can contact them and tell them that these are the centers that we have enrolled. We have joined this center, this industry, and probably NSTC can work on it to rope them in and work on the stipend. But if that stipend has to be given to the enrolled learners, it is a mandate that one has to go through NSTC only. And in case a student wants to choose his or her work center, as I already mentioned, the center will be first verified by the NSTC. So you have to let NSTC know which center you are approaching to and which company you want to do your internship. So for the student to do their internship and practical component. And the helpline number for contacting NSTC is 93303-45123. Now, moving forward with the internship, there are certain steps that one has to follow once you have joined the internship. The first one is joining the skill center provided by NSTC. Start internship in the assigned industry. Activities undertaken during internship like production, sourcing, packaging, quality check, etc. one has to do. And then the enrolled learner has to keep in touch with the academic counselors. So all these steps are, it's a part of the whole, internship process. Once you join the industry, you have to go through these one by one. It means student have to contact to the work centers persons, and they start their internship at the NSTC centers. Yes. Okay. So this internship is only for the NSTC centers. If you have your own center or industry for internship, you may be not paid for the stipend and the benefits from the NSDC you get. So next one is how the training will be executed
and what kind of activity you have to done in the industries. So the main role of the industry supervisor is, the supervisor at the industry should be senior or junior merchandisers. You have to work under the senior or junior merchandisers to understand the work process of the apparel industry. And being an internship supervisor, the main job of the internship supervisor is actually to look forward to whatever the enrolled learner is doing. So if they are stuck with something, the supervisor has to kind of take care of that. One has to give all the ideas and what are the functions and a whole a kind of tour to the whole industry, and look after the learner basically, and teach them everything that is there in the practical and the internship manual that will be provided by the school in this program. And they have to guide the learner and assign the work or task for a better understanding of the apparel industry. Now, when we are talking about apparel or clothing or textile industry, it's all about practical work. So anything that one has to learn, whether it's sewing or the knowledge of the fabric or the fiber. So how do you get to know whether the fiber is a cotton fiber or a silk fiber, or maybe a polyester or rayon, a synthetic fiber, or jute or linen? So having that knowledge, it's all about the touch and feel, and there are lots of textile testing that has been that one can do to identify these fibers. So a lot of practical work is involved here, and until unless a task is being assigned to the learner, probably it won't move forward smoothly. So assigning a work, assigning a small project is also very important, and an integral part of the industry supervisor. The industry supervisor will also evaluate the learners based on his/her internship file and overall attitude of learners, such as sincerity and professional competence. So once you join this industry, whether you are doing it for 3 months, 4 months, or 6 months, you have to be regular, you have to be sincere. The learner has to be present on field, on the industry every day, and do your work properly. I mean, as I just mentioned, that it's all about the practical touch and feel. That's how you get the whole knowledge when we talk about the apparel or the clothing or the textile industry. So having that is very important. See, if learner will involve in the production process and the sourcing process, Right. They will learn more by doing these things, to interact with the buyers, to interact with the vendor from the raw material purchase. So this training part is very important for the learners in this program, and you can get more opportunities for the internship and practicals in this program. Yes, and also since the last point talked about the internship file, let me just tell you that once when you are doing the internship, when you have enrolled yourself and you are doing the practical and the internship, you have to make an internship file, a report. So we will be talking about that report, but when you make that report, it will be judged, it will be, the evaluation will be done by the internship supervisor. So the evaluation will be both at the internship supervisor level at NSTC, and also the major part will go to Ignou as well. So making that report, understanding everything, having that attendance every day, and it's not that you will just mug up and write something in the report. The regular knowledge that you are gaining with the tip of a point, if someone asks you a question and you are unable to answer, probably it's a continuous assessment, evaluation that the internship supervisor will be doing when you join the skill center. So making that file and having that knowledge is important. We will continue with the session in a few minutes, and we'll take a small break here. सही जा रहे हैं, पर बहुत जल्दी कर। We wear clothes on a daily basis. But have we ever wondered, where do our clothes come from? Who makes our clothing? And who are the people
and the process responsible for the whole manufacturing of our clothing. If you want to know more about this, Indira Gandhi National Open University from the School of Continuing Education has launched a program which is Certificate in Apparel Merchandising. There are many benefits after doing this program. You can become a designer in various fields. It can be fashion designer, apparel designer, costume designer, or even a textile designer. One can also work as a fashion consultant. Research and development is another field which one can take up after doing this certificate course. Going into academics is another perk after doing this program. Getting into fashion houses or fashion studios as an intern is also a very good option post doing the certificate in apparel merchandising. The basic eligibility of the program is 10+2. The duration of the program is 6 months to 2 years. The program is also available for both the admission cycles, which is July and January. The exams are conducted twice a year, in June and December. So what are you waiting for? Join this program and get an enriching knowledge in the field of apparel merchandising. And to do so, you can log on to the official website of the university, www.ignou.ac.in. Now, coming back, we will talk about how to select an internship center. So, as we have already said that the internship centers will be provided by NSTC, and it's available in various cities and states, at least 5 to 6 states it's available. So, as we have mentioned, the centers will be provided by NSTC. For this, a monthly stipend will be paid by NSTC to all the enrolled learners. Now, once you join the internship, what do you have to do as an intern? So you have joined the industry, you are doing the internship, you are there to learn something. So what do you have to do? As an intern in the apparel industry, one must engage in a wide range of activities that will be assigned to you by the supervisor, by the industry supervisor. So as we mentioned, we talked about that there is an industry supervisor, an internship supervisor, who will be kind of your boss for those few months. You can take it as that way. And that person is going to tell you what you have to do, what you don't have to do, how you have to move forward, what are the things that you have to learn based on the syllabus that will be provided in the internship manual. Now, also, it is very important to listen to your industry supervisor and do exactly how that person tells you to do and to learn all those things. Another thing that one has to do as an intern is to take internship specifically in the merchandising department to understand the work procedure of the departments. Now, this, again I am repeating this, that the program name is Diploma in Apparel Merchandising. The whole focus is on either on apparel or the merchandising part. So it's very important that one has to understand what is the merchandising process. Who is a merchandiser? What does he or she does to be a merchandiser? And the whole merchandising process in all actually. And to be there to understand everything, it's very important that
one has to take that internship in the merchandising department. So there are lots of small clusters, lots of small departments when it comes to an apparel or the clothing or the textile industry. So this internship will mainly focus on the merchandising part. So as an intern, you have to go to the industry. You have to basically focus on the merchandising, part of the industry and do your internship there. And also as an intern, the meeting with buyers, creating samples of products, completing the product and its design, and receiving orders from buyers are some of the steps in the merchandising process. So as I had mentioned this earlier also, that merchandising process, merchandising word itself, it basically deals with the creation of an idea, right? When some new notion comes to your mind to have a new product or an enterprise or a commodity, and going till the end stage of providing that product, providing that commodity to the customers or the consumers. So the whole thing involves a lot of steps. It can be production, it can be fiber making, it can be weaving, it can be, printing, dyeing. Lots of various steps are there. So all these steps has to be, as an intern, one has to know all these steps. And of course, the marketing and selling of that product, the quality check is also an integral part. As merchandising is the field that from the initial stage to end stage, when the product is in the thought, and when the product is come for the execution, for the designing, for the production, for the packaging and the finishing, all about the merchandising process. So the intern should have involved in each process and understand about the clarity, the minute process of the designing, market survey, forecasting, and product development, manufacturing, packaging, and shipment of that final product. So this merchandising process is a very clear and step-by-step stages. You have to learn about every stage perfectly, and you have to learn about the different type of activities like market survey. First step is as an intern you have to learn about the different processes like market survey. In market survey, you have to go to the current market stage and learn what is in trend, what is demand for the consumers, and what are the competitors, who are the competitors of the industries and the product. And this process also consists of the identification of sourcing agency, because when you talk about the product development, first of all you require raw material, and for this you have to require some raw material like fabric, like accessories, trims. So you have to analyze the market and identify the vendors from the market so that you can get raw material on time to produce the final product. So this process is like collecting small things together and make a product. Yes. And also when you say the market trend, see, market trend is something that involves a lot of other things. As Dr. Anuradha mentioned that we have to make a product, sourcing is very important. But when we make a new product, we have to have the raw materials. We need to know where that raw material will come from, so that to achieve that step, sourcing has to be done. But a very important step that comes before that is also forecasting. We are talking about market trends. We always say in a day to day basis, हम ये product trend में है या ये product style में है, ये मेरा personal style है. So when we use these words like trend or style, या ये मेरा fashion है, this is how I present myself, forecasting plays a very important role, because you must be seeing different fashion weeks that happens across the globe actually. Not only in India, you have Paris Fashion Week, Lakme Fashion Week, lots of fashion weeks. So what do they do actually? They actually present a collection, a line that represents something that is going to be there in the market after 6 months, ya 1 saal, or maybe even 2 years also. So we are in October 2023 right now, but abhi se agar aap thoda sa fashion industry ko agar aap follow karte hain, and being a merchandiser, apparel or clothing student or learner, one has to follow these
these things to be updated with what's going on in the fashion industry, clothing industry. So agar aap ye sab cheeze follow karte hain fashion news, you will see that these collections, these lines actually being in October 2023, ये collection जो दिखाया जाता है ये actually 24 का होता है. तो जो designers होते हैं वो इस पे focus करते हैं कि कौन सा color, कौन सा raw material या कौन सा fabric या कौन सा trend, किस तरह के cut, किस तरह के silhouette, कौन से basic fiber क्या है जो कि अगले साल मार्केट में लोगों को पसंद आएगा. तो ये फोरकास्ट करना बहुत जरूरी होता है और इसे फोरकास्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं. वन कैन हैव प्राइमरी फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज, फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज. प्राइमरी मतलब आप खुद मार्केट जाके ये चीज फोरकास्ट कर सकते हैं कि इस समय क्या चल रहा है और एक थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना पड़ता है कि अगले साल क्या चीजें होंगी जो कि एज कस्टमर्स या एज कंज्यूमर्स मास मार्केट को पसंद आएंगी. सो दैट फोरकास्टिंग process is very important when we talk about the market research and the first step in the this thing. But now question comes, how to analyze the market, how to forecast the market. There is some simple steps for the forecasting and analyzing the market. First one is the interview schedule and some kind of survey. You have to go to the market and interview the consumer, that your ultimate consumers, and talk about their requirements, what they want in a new trend, what they want in different styles, and what if we talk about the shirt, what they required in changes in the shirt, like collar, which type of collar they required in next fashion. So this kind of forecasting and market survey is required for the merchandising process, and this is a first step after which the product will be designed for the next session. So next is the product and sample development. This is when we go for market and talk about the forecasting and we get some idea about the target consumers. Then the merchandiser come at the office and work with the fashion designers teams, in which the senior designers and junior designers have some team, and they design according to the consumers, according to their requirement. They develop some sketches for the product and develop some samples. The samples are different type of samples as So there are various types of samples here. Whenever a product is made right from the scratch at the completion of that particular product, जब भी product complete हो जाता है, बन के in hand आ जाता है, why we are talking about sample development is because when the buyer gives the order, what happens is there are a set of instructions that come along with that. So ये color होना चाहिए, इस तरह का fabric होना चाहिए, and lots of such things. So when you make that product in bulk quantity, there is a high chance that the product might not be happy with it, या उन्हें ऐसा लगे कि नहीं मैंने तो ये ब्लैक बोला था, आपने तो दूसरा शेड ब्लैक का मुझे दे दिया. तो सैंपल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जब 5-10 पीसेस सैंपल के बनते हैं उसे वापस से बायर के पास भेजा जाता है कि आप देखिए या आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग है या नहीं. एंड वंस द बायर अप्रूव्स दैट, सो द सैंपल इज डन, सैम्पलिंग इज डन, एंड देन बल्क प्रोडक्शन स्टार्ट्स. Now followed by this, the third step is the buying and assortment planning. What happens in buying and assortment planning is the supporting and buying team by analyzing sales data, assisting with inventory management, and participating in the assortment planning process. Also, the buying and assortment planning includes researching potential vendors, comparing prices, negotiating with suppliers, quality, and preparing purchase orders. So we are talking about the buying part here, the sales part here. So what happens is once the product is done, it is assorted into
certain categories, and the buying process starts and the buying thing happens. And what happens here is कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे steps involved होते हैं इसमें, जैसे कि researching potentials. We need to have vendors here, lots of vendors, because vendors are the ones who are going to buy that product and sell it to the customers. So having a vendor and then the comparison of the different prices that are available in the market. The same product might be available in various different prices. So अगर मुझे एक साड़ी खरीदने जानी है, तो I'll go to 10 different sari shops probably, and I will decide which sari shop has, kind of matches my budget and where I'm getting the good quality. So comparison of the market is something that is very important, and without negotiating, the whole process is not complete. So negotiation with suppliers, negotiation of the raw materials, quality check karna, prepare karna usse, purchase order banana. We have the, the products are ready with us, and now we have to make the purchase order and we have to send it to the buyer. So all these steps are pretty important here. Talking about the next step, it's about inventory management. When we say the word inventory, it is about the stock. That is, the product is complete. Now it is put somewhere. So maybe probably a go down or a huge room में उसे रख दिया जाता है और उसका inventory किया जाता है. So based on the kind of products, the separation, as we said, assortment होता है. So based on that assortment, this inventory is being managed. As you said that inventory management is required for the production unit. Yeah. So the inventory management is when we purchase the raw material for the production of 1,000 pieces, it required some sections, so that at the time of production, the fabric and the accessories and the trims is available for the production easily. So inventory is very important for the merchandising team, that they have stock enough amount of fabric and trims, so that production line will go smoothly and product will finish at the given time, so that it will go to the market at exact time they have to launch the product. So next is visual merchandising process. After the production is done and the final product is developed, the intern should also be involved in the creating visually appealing display and layout for retail store or online platform, and assisting the marketing and promotional planning and its executions. Because when the product is ready, it is ready to sell, and when you sell your product, it should be eye-catching and it should be attract your consumer directly. So visual merchandising is very important for the intern, so that they can, if you plan any business or your startup, you have to know about how to display your product, so that the ultimate consumer and the maximum consumer the product can attract. So this process is required for the intern. The next process step for the internship is cross-functional team. Now, before we go to cross-functional team, as we are talking about the visual merchandising, see, a very simple example can be given here. We go to the market and we see, some festival is coming and the whole market is being decorated, in keeping that festival in mind. So, Holi agar hai, to lots of colors will be there. Diwali hai, to lots of diyas and, crackers will be, the stickers of these things are actually put in the market, in the visual part. And that is something that actually attracts the market. The people, the consumers or the customers. So visual merchandising is one of the things that, being an intern, as doing internship in a skill center or the work center or in the industry, you have to have that knowledge of making something very simple into something that looks pretty and attractive to the consumer. The next step is your cross-functional team, which is working closely with various departments within the organization, such as design, production, sales, and marketing. Now, as the name itself suggests, cross-functional, that means that something is being crossed. So what happens is, there are individual clusters, individual, teams that work in an industry. But without the coordination of each team, it is not possible to, have a successful product. So whenever we say cross
cross-functional, what happens is the merchandiser has to work with the production team has to work with the marketing team has to work with the sales team. So that coordination among various teams is very important, and this collaboration allows them to gain a holistic understanding of the apparel merchandising process and the interconnection of different functions. So what happens is, without having this coordination, without having this connection between the groups or the teams, working smoothly, I would say, is becomes a little difficult. See, merchandising is the job role in the industry that who is the overlook all the processes, like initial stage to end shipping of the product. So the cross functioning of team is required for the merchandising team, because merchandiser have to collaborate with the stock persons, production persons, and the sourcing persons also, and they have to look after the production line also. So, and after that, the packaging and the finishing of that product, because the person who the face of the industry is merchandiser, and who interact with the buyer directly is the merchandiser. So merchandiser is required some skills to manage with the all departments in the industries. So next point is, when you done with your internship, after that you have to write a report what have you done in your internship. So for writing a report, it is suggested that you have to maintain a diary at the initial stage, and whatever work you have to assign, you have to work on the project, you write on a diary what have you saw in the industry, the work process, the production line, and the paperwork. Jot down all the points to the diary, so that it will help you to write a report for the internship. For report writing, you have to maintain some sequence, like you have to write a cover page for the internship, then acknowledge every person who helped you in writing a report for internship, then table of contents in which you have to paste numbers of figures and tables, and the content introduction of industry and the work you have done in the industry. Then firm profile is very important in the report, because it shows that what kind of industry you have for the industry, for the internship, and what kind of work you have done in your internship. After that, some kind of objectives you have to form for the internship, that like you have to learn about the merchandising process, you have to learn about the sampling process, and then responsibilities of intern. As an intern, what kind of responsibilities you have in the industries. So this report will show how you worked in the internship. This is very important document for you, on which you are assessed and marked for the internship course. Now, we have completed the internship part, we have written the report, and you will submit this report to your industry supervisor, and it will come back via NSTC to Ignou also for further evaluation. Now, the second skill component that we are talking about here in this program is the practical part. Now, practical for this program, the objectives are, the main objective of this practical manual in apparel merchandising is to provide learners with a detailed and practical understanding of the processes involved in the producing and managing the apparel products. This practical manual is designed to help learners to apply the theoretical knowledge to real-life situations and to provide learners with a comprehensive understanding of the merchandising process. So, as we said that, having that hands-on practical knowledge is very important. So, whatever you are studying in the theory is one thing. But if I tell you that, cotton fiber has lumen inside it, and then it is very rough in its texture and it is not shiny,
Are you able to understand it? I don't think so. So what happens here is you have to see that fiber. You have to see the microscopic structure of that fiber. You have to see the longitudinal and the cross-sectional view of that fiber. And you have to have the practical knowledge via maybe textile testing with burning test or chemical test and things like that. So that practical knowledge, जो भी theory में आपने सीखा है, जो भी आपने पढ़ा है, उसे practically कैसे हम implement कर सकते हैं अपनी day to day life में. आप market जाएं और आपको silk साड़ी बोल के कोई polyester ना दे दे, ये सारी चीजों के लिए theory के साथ साथ practical knowledge होना भी बहुत ज्यादा important होता है. This practical course is provide comprehensive knowledge to the learners. So when we talk about the theory, we talk about the different kind of theories and with different kind of fibers, different kind of fabrics, different kind of finishes. When we talk about the practical, we are executing the printing process. We are identifying the fibers for the end use of that fiber or fabric. So this practical component is very important for this course, because when you go for the internship, the practical component is there for the hands-on training, and you have to fill the practical manual which is provided for this course, and you have to done all the activities like identification of fibers and elements and principles of design. How to identify the fiber? As Dr. Richa says, you go for the purchase silk fabric and the vendor give you a polyester and viscose which is look like a silk. How you identify? You can identify at the shop by burning test. So in this practical manual you have the theoretical notes that how to identify the fiber, what kind of fiber is executed at the time of fire. When you जब आप उसको fire के पास ले जाएंगे, then fiber कैसे execute करेगा, कैसा burn करेगा, कैसे smell करेगा, then you identify that is a pure silk fiber or that is a pure cotton fiber. So this type of small practical will be included in this practical manual, in which give you a whole knowledge about the textiles, fibers and the printing process and the finishing. So this is all about the process of this diploma courses, where some theory, 3 theory courses and internship and practical is there. Main focus is on internship, as it is a skill-based program and NSDC will collaborate with us. So this is a main focus of internship, that student have hands-on training and get their business or get their job in internships. And also, we have just jotted down a few activities that you will be doing in the practicals. There are lots of many other activities. Like we just said, activity number 1 will be, identification of textile fibers, which can be done in many ways by, physically touching the fiber, by doing burning tests, by doing chemical tests, or maybe observing that fiber under the microscope, and you can see how that fiber, kind of reacts to various surroundings and environmental factors. And also there are other activities that we can do which will be there in the practical. For example, knowing the elements and principles of designs. So when we talk about the elements and principles of design, there are lots of small elements and principles that contribute to the look of a garment. So a fabric might be completely plain. How is it going to look on you? Or you put stripes into that, maybe lines. It can be horizontal line, vertical line, diagonal line, zigzag line, various kinds of lines or different shapes or prints. So it's not only the plain fabric that is being constructed in the industry that is available in the market. There are lots of, as Dr. Anuradha mentioned, that lots of printing and dyeing, are being given there. And this printing technique is done for enhancing the look of the fabric. Now, I'm wearing a plain sari and it might not look very appealing to a person, but if we put maybe some prints on that, some कोई केरी print आप डाल दीजिए, block printing कर दीजिए, batik कर दीजिए, and उसका पूरा appeal change हो जाता है, वो enhance हो जाता है. वैसे ही कई सारे और activities हैं, जैसे कि another activity that we would like to share with you is classification of trims and accessories. So and dyeing and printing. So there are lots of accessories that are being put in a garment. We
have a shirt, there will be buttons. We have a pant, there will be zip, there will be, certain other things as a part of the accessory. Fasteners hoga, zips honge, buttons honge, velcros ho sakte hain. So all these trims and accessories actually contribute to how a garment looks. So practical में ये चीज जानना, ये चीज उसे practically करना, वहाँ पे how to put it on the garment is something that you'll get to know in the practical. And also the dyeing and printing, as I said, कि हम कोई भी fabric थान का जब कपड़ा होता है वो बिल्कुल plain होता है, तो उसे उसका अपील enhance करने के लिए, उसे और better दिखाने के लिए हम उसे dye कर सकते हैं, हम उसे print कर सकते हैं. There are various other techniques in which we can do that. And the last topic for this program that we would like to share is, there are lots of job opportunities that you will get after doing this program, the Diploma in Apparel Merchandising Applied. And as we said, the internship will be provided to you by NSTC. So you will get to learn a lot in the internship. You'll get to learn good hands-on knowledge in the practicals. And the job opportunities that you might get after doing this program, for example, merchandiser. You can become a merchandiser. You can work into export houses or export units. Merchandising, of course, is an option. Then visual merchandising. There are various types of merchandisers also. Fabric export houses, textile laboratories, buying agencies, apparel manufacturing unit. So lots of options are there that one, lots of job roles are there that one can do, one can become after doing this course. And so this is about the program of Diploma in Apparel Merchandising. To summarize, this is done with, this program is launched in collaboration with Ignou and NSTC. And today probably is the last day for admission. You can still join this program, pay the fees at the NSTC portal first, and then come to Ignou portal and join this program and get an enriching experience of apparel merchandising. Thank you so much. Thank you so much. Welcome to the introductory session on ice cream and frozen desserts. We all enjoy the frozen